चलो जी, स्ट्रीमिंग बस शुरू ही है, बस हो रही है उधर से। एक मिनट बस, इधर आ जाए एक बार। चलो जी, ओके। मैं अश्विनी जिंदल आप सबका स्वागत करता हूं डे 4 में। हालांकि पीयूष जी हमारे ओवरऑल, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलराउंडर बैट्समैन भी हैं। ये मतलब हमारे बेस्ट फैकल्टी हैं। अगर हम कहें कि जब को आपको होता है कि इजीली अप्रोचेबल, कई बार क्या होता है कि जितनी भी फैकल्टीज हम बेस्ट टू बेस्ट अपने कोर्स में बुला रहे हैं, वो आपको इतना इजीली अवेलेबल शायद कई बार नहीं होती, क्योंकि सबको मतलब इतना पता नहीं होता मेंबरों का टेलीफोन उठाने में या और रिप्लाई देने में। पीयूष जी हमारे, हम लोकली नहीं कह सकते, ही इज एन एक्सपर्ट इन जीएसटी, क्योंकि काफी सब्जेक्ट पे हमने देखा है कि इनकी क्लैरिटी काफी अच्छे जो हमारे टॉप फैकल्टीज हैं उनसे भी बढ़िया है। चाहे किसी भी मैटर पे हो, चाहे वो हमारा जो पीछे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डिवेलिंग के ऊपर जो आया था, इनकी कंसेप्ट क्लैरिटी, चाहे वो मेट्रोलॉजी एक्ट के ऊपर हो, इनकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि पीयूष जी हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ मॉडरेटरी थे। आज जो हमारी फैकल्टी वो थे, वो आदित्य अग्रवाल जी थे। आदित्य अग्रवाल जी की तबीयत किसी वजह से खराब है, तो उनका रिक्वेस्ट आया कि मैं ये प्रोग्राम आज नहीं ले पाऊंगा। तो हमने सोचा भी इंस्टेड ऑफ डेफरिंग, तो हम जो पीयूष जी वो एक्सपर्ट हैं, तो आज वो जो पार्ट है आपका ई इनवाइसिंग का और ई इनवाइसिंग का पार्ट, मेनली जो आज की डेट में ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल है। और हम सब जानते हैं कि ई इनवाइसिंग की लिमिट गवर्नमेंट डे बाई डे रिड्यूस करती जा रही है, और आने वाले टाइम में ये 5 करोड़, उसके बाद हो सकता है और रिड्यूस हो जाए। तो मैंने रिक्वेस्ट की पीयूष जी को कि आप ये टॉपिक आज टेकअप करें। अगर बाद में आपके टॉपिक कुछ लेफ्ट रह जाएंगे, छूट जाएंगे, तो हम इधर वी विल लॉन्च डेट कोर्स 2 पार्ट 2 लॉन्च करेंगे, जहां फिर इसके डेज एक्सटेंड कर लेंगे। तो आज पीयूष जी आपको ई इनवाइसिंग के बारे में बताएंगे। जितना भी टाइम लगेगा, चाहे वो 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो, या 50 आधे घंटे में हो, तो ही विल टेक वन टॉपिक ओनली। तो टुमारो वी विल टेक इंडस्ट्रीज, रचना अर्चना जैन जी आ रही है, एंड देन डे आफ्टर टुमारो अरूप दास गुप्ता जी, मार्वलस स्पीकर, बोथ आर दी मार्वलस स्पीकर जो आ रहे हैं, वो भी कलकत्ता से है जी, दास गुप्ता जी कलकत्ता से, अरूप दास जी कलकत्ता से। हाँ, ही इज मास्टर इन जो आपके 99C GST 1 3B इन सब के रिकंसिलेशन में, all the recent changes in 3B and 1 and IFF and GST 9 9C, everything he will be dealing. and Even tomorrow with we will 2B having the industry specific topics by अर्चना जैन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम टू द पीयूष बंसल टू काइंडली स्टार्ट द प्रोसीडिंग। थैंक यू अश्विनी जी। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। सर प्लीज एनेबल स्क्रीन शेयरिंग फॉर मी। लो जी सर, सॉरी, वो आप को होस्ट हो गए जी। माय स्क्रीन इज विजिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी। वैसे तो आजकल ऋषभ पंत के बारे में सब कह रहे हैं कि इसका क्या काम है, ये कुछ कहीं चलता नहीं, स्टेपनी बैट्समैन है। तो सेम वे आई एम आल्सो बीइंग यूज्ड एज स्टेपनी फॉर दिस टुडे सेशन, बट आई विल ट्राई टू जस्टिफाई योर टाइम एंड माय टाइम, बोथ ऑफ अस, so that we may enrich our knowledge on this topic, e-invoicing. Sir, we all know e-invoicing has been introduced way back, and now it is the most hot thing that e-invoicing, the turnover for e-invoicing is being reduced on daily basis. So we are here to discuss about e-invoicing. Let me be very clear that e-invoicing is introduced for reporting of invoices for B2B supply or for export. B2C, no, it is only for B2B supplies or for exports. We have to mention two things. We have to keep in mind two things, that it is applicable only for B2B and for export. And it is electronic reporting. It is not a separate invoice. As earlier it was said that it is a separate invoice generation. We will be creating separate invoice, online invoice we will be creating manual invoice, nothing like that. It is reporting of invoices for B2B supplies or for exports electronically to GST system for certain notified category of taxpayer. We all know that
current notification is from 1st October, it is 10 crores. 1st October onwards, if any of the registered businessman, any registered taxpayer, RTP we normally call that, having turnover above 10 crore from financial year 17-18 onwards, 2017-18 से अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, then you are liable for this e-invoicing, not before that. अब पॉइंट आता है कि मेरी करंट ईयर की टर्नओवर 22-23 में 10 करोड़ क्रॉस कर गई. As on this 28th November, I'm just crossing 10 crores. It is 10 crore 500 rupees. Am I liable for this e-invoicing from tomorrow? The answer is no. We will keep Q&A open. There is a question from Jagmeet Singh ji for services also. Sir, I will go back to the earlier slide that will make you the things clear. B2B supplies or for export of goods or services. बताइए sir, let's take it up with all of us. Answers, please, answers. Mukesh ji, your answer question we will be taking up. I have all the questions framed and we will be taking up all that questions. FQs we will be taking up and we will be answering at that part. Everything will be taken up, otherwise it will be a hodgepodge. So we'll be taking up all the questions. Let's cover the basic part first and then we'll be on Q&A. As told to me by our moderator कि पहले आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए फिर Q&A में जाइएगा. So I'll be taking up accordingly. I'm saying that if your turnover is greater than 10 crore, if in the previous year, the wording is in any preceding financial year. If it is in current year, then I'm liable from the next year. Aggregate turnover. What is aggregate turnover? My aggregate turnover exceeds 10 crores. Mind it, from 1st January it is 5 crore and from 1st April it may be reduced further. As per the tweet from finance department, they are working on to make it 1 crore. Let's see what happens. But from 1st January it is 5 crores. 5 crore of aggregate turnover. Aggregate turnover include your exempt supplies. All taxable supplies, exempt supplies, export of goods or services or both interstate supplies of persons having same PAN. तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे हमारी टर्नओवर हमें देखनी है. पूरे इंडिया की टर्नओवर लेके हमें जो एग्रीगेट टर्नओवर की हमारी डेफिनेशन, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट डेफिनेशन, बट what I want to highlight is exempt supplies is also part of aggregate turnover. Please don't miss that. And what is exempt supply? Supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax, wholly exempt under section 6 IGST and include non-taxable supply. So in case of petrol pump, filling station, turnover of petrol and diesel, though they are not part of our GST, still that would be considered for considering this turnover of 10 crores. That will be part of that amount of petrol and diesel sale will be part of your aggregate turnover for 10 crores. Are we supposed to do invoicing for each and every document? No. We are to do invoicing for tax invoice, credit note, debit note. Not for financial credit note or financial debit. What credit note or debit note have been issued by the supplier under section 35, that is covered under e-invoicing system. Only the three things: tax invoice, credit note, debit notes. Nothing else. For delivery challan, e-invoicing is not there. Right? For any other thing, e-invoicing is not there. It is for tax invoice, credit note and debit note.
Credit and note and debit note, I am one again reiterating that it is as per section 35. Those have been issued by the supplier. Advantage is auto reporting of invoices into GST return. Whatever you have e-invoiced would be there in. I'm just going quick on it because these are just basics so that we can spare up most of the time on Q&A and we can discuss that Q&A in detail. Where you are going for e-invoicing, auto generation of e-way bill as applicable above 50,000, that would be there. Some exemptions are from e-invoicing. SCZ units are exempt. Insurer or banking company or financial institution, including NBFCs, are exempt. GTA, supplying services in relation to transport of goods by road and goods carriage, are exempt. Supplier of passenger transport service and person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screen, not single screen cinemas, in multiplex. So these 5 are exempt. We must remember this, that these are exempt. Main part is banking is exempt. SCZ units are exempt. GTA exempt. Passenger transport service exempt. Admission to exhibition of cinematographic films exempt in multiplex. 2 phases in e-invoicing: generation of e-invoicing and uploading of invoice to invoice registration portal. What is the way to register? No need for registration as on date. Whosoever is liable as per the aggregate turnover in the record of GST portal, they are making that person liable as such. They are making him eligible. They are sending him mail that your e-invoicing portal has been made applicable. And remember it, whatever the password you are having for your e-way bill, the same password is for your e-invoicing. We can prepare generation of e-invoice as on date. All the softwares are preparing e-invoices, whether we name it Tally, whether we name it BZ, we name it CAD Pro or any other similar software. Every software is generating e-invoicing. You can generate invoice as you are doing on your portal, on your software, as in the normal process. And then from there, you can go for e-invoicing from the software. But still, if you don't have that software, or you are generating e-invoice, normally you are doing B2C, and you don't have that facility, or for one particular case or 1-2 cases, you are going for e-invoicing, then there is a tabular format available on e-invoicing portal also. You can generate e-invoicing on the portal also. Invoice to IRP, we have to generate invoice. IRP will generate invoice reference number that would be digitally signed, generated QR code, return the e-invoice to supplier. QR code में क्या क्या डिटेल होगी? GSTN होगा supplier का, recipient का, invoice number, date of generation, all the details we require for e-invoicing. For invoice, that would be there in the QR code. Registration, I have already told you. If you want to register, then there is a separate portal, IRP invoice registration portal. Click on the registration link. You will be asked for a OTP. That OTP will be on your registered mobile, which is already on GST portal. After fulfilling that requirement of OTP, enter username of your choice and password of your choice. By default, I am repeating that your password is e-way bill portal password. This is the login portal. Registration, e-invoice enablement. Here you will be doing that e-invoice enablement. This is the portion. E-invoice enablement would be there. From here, you can do that. Now I am on to FAQs. I believe this would be more beneficial to all of us rather than other basic theory that we all know. So now we will open our Q&A also and chat box. Use one thing. We will be using chat box for this, for answering our FAQs. So I request everybody to open chat box and write in the chat box. Our first question.
I have told you already that B2B supplies and for export, we need this e-invoicing. Can B2C supply also be reported by notified person? I am having turnover above 10 crores. Can I notify my B2C supply also in e-invoicing portal? Yes or no? गगन सलूजा जी कह रहे हैं नो, दिनेश गुलाटी जी नो, अंशुल गुप्ता नो, एवरी विनोद शर्मा जी कह रहे हैं यस. फॉर क्लैरिटी, हमारी B2C रिपोर्टिंग नहीं होगी. As on date, if you want to report B2C detail, you won't be able to do that because on the portal this facility is not available. Reporting B2C invoice by notified person is not applicable or allowed currently. So if we want, we cannot report. Only B2B and export. Is e-invoicing applicable for nil rated or wholly exempted supplies? My turnover is 11 crores last year, and I'm dealing in only exempt supplies. Gagan Saluja ji, yes. Anil Kumar ji, yes. Gagandeep Narang ji, yes. Rajinder ji ने कहा है no. कुमुद जी ने कहा है no, only for taxable products. हाँ जी. And no. In these cases, a bill of supply is issued and not a tax invoice. और हमारे सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट हैं, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट. We cannot issue, even if we are making B2B sale, even if we are making B2B sale of wholly exempt supplies or nil rated supplies, no for e-invoicing, because we won't be issuing tax invoice, we would be issuing bill of supply. Gagan ji कह रहे हैं sir, but sir nil rated is also a tax rate. Agreed sir, agreed. I don't say 0% tax is also a tax percentage, but we don't issue tax invoice there. We issue bill of supply there. That's why we won't be issuing e-invoicing. We won't be doing e-invoicing. Whether the financial, commercial credit notes also need to be reported to IRP. दिनेश जी ने कहा है नो. यस इट इज. गगन जी कह रहे हैं यस. राकेश जी कह रहे हैं नो. गगनदीप नारंग जी कह रहे हैं यस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो 34 के अंडर हमारे डेबिट क्रेडिट नोट इशू होंगे, सिर्फ वही रिपोर्ट होने हैं और कुछ नहीं रिपोर्ट होना. फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट तो मैंने डेलिब्रेशन के दौरान ही कह दिया था. आई हैव टोल्ड यू कि फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट्स आर नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड टू IRP. That means need not to go for e-invoicing for them. Only under section 34, where, let me tell you the example. I have sold some goods, considering I'm liable for e-invoicing. I have sold some goods, say for 5 lakh rupees. And later on I found that there is goods return. Some say 1 lakh rupees of goods have been returned to me. Now I will be issuing credit note for that, because as a supplier I have to issue credit note. That credit note, what I am issuing is under section 34, and for that I would be required to make e-invoice. If I am giving some say discount of 10%, then that credit note is a commercial or financial credit note. I need not to report. राजेंद्र संतल जी ने कहा, in other word, if GST is involved, then will be reported. बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी. गगनदीप जी ने कहा, if vendor issues debit note, sir, in GST vendor's debit note has no value. Only the supplier's documents are valid. Debit note by supplier, credit note by supplier, only that is considered. Even in our 2B, when we report anything in our GST or 1, we can report of credit note and debit note from supplier side. Next question.
I can assure you, sir, after these FAQs, all our queries about e-invoicing would be clear. Still, if there would be anything left, I am available. Whether e-invoicing is applicable for supplies by notified persons to government departments. राकेश जी कह रहे नो, दिनेश जी ने भी कहा नो. I am a supplier. I am liable for e-invoicing. I am notified person. I am making some supplies to government department. Gagan ji कह रहे हैं yes. Ramanathan ji also told yes. Mukesh Gupta ji, yes, if they are registered. Very good, sir. E-invoicing by notified person is mandated for supply of goods or services both to a registered person only, B2B. Thus, where the government department does not have any registration under GST, e-invoicing doesn't arise. Mukesh ji ne jo kaha, if the government department is registered, then it is B2B. Only then e-invoicing would be applicable. Otherwise, it won't be applicable. However, where the government department is having a GST and as entity supplying goods services deducting TDS, the same has to be mentioned as recipient GST in the e-invoice. Yes, sir, I have clarified that point. Gagan ji ne kaha that's implied because B2C also not reported. Yes, if it is B2C, we won't report. If it is registered person, the registered for TDS is also a registration. We can mention is GST and that is B2B. Clear? Should we move further? Whether e-invoicing is applicable for invoices between two different GST and under same PAN, distinct person. We are talking about distinct persons. I'm having same, I'm registered in Punjab also, I'm registered in Delhi also. I'm sending my goods or services from Punjab to Delhi. Am I liable for invoicing? Yes, yes, yes. Kumud ji ne bhi kaha yes, Ravi ji ne, Namanathan ji ne, Rakesh ji ne, Amit ji ne, everybody is saying yes. So, with going with the majority and with all, answer is yes. For high C sales and bonded warehouse sales, whether e-invoicing is applicable? Hanji, high C sale, bonded warehouse sales, whether e-invoicing is applicable? Yes, yes, yes. No. These activities, high C sale to bhai apni supply mein nahi aati. These activity transactions are neither supply of goods nor a supply of services as per Schedule 3 of CPST SGR. These are not supplies. When there is no supply, then how we can issue e-invoicing? I hope this point is clear. Some of our participants are using Q&A for answering. I would request them to please move to this chat box so that we can take up only Q&A later on. Whatever your query is there, we can put that in Q&A. And for answering our FAQs, please use chat box. I'm moving further. What is the applicability of e-invoice for import transactions? Import transactions. पृथ्वी जी कह रहे हैं नो नो नो. बीच में एक यस आया चमन जी का और एक इससे पहले भी यस आया. राजेंद्र जी ने कहा यस. E-invoice is not applicable for import bills of entries because we are not, that is import transaction. We need not to. Manpreet Madan ji has raised hand on this point. मनप्रीत जी आपका कोई पॉइंट है? नहीं, शी हैव नो व्हाट. गीता जी कह रही हैं नॉट रिक्वायर्ड, इज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस.
For taking credit, not required. Liable to reverse charge, other party not registered. So we all are learned people, we can understand the things very quickly. ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है कि हम कुछ चीजें क्लियर कर पाए, अदरवाइज वी ऑल नो सेम थिंग, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द लॉ, वी ऑल आर ऑन द सेम फुटिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, बट ये क्वेश्चंस हमारी चीज को थोड़ा सा घुमा के क्लियर कर देते हैं, तो वो वाला पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, is in e-invoicing applicable for supplies by notified person to SEZ? No. Exempt? No. 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 Not applicable. No. Yes. मोनिका जी ने कहा yes. मोनिका जी ने कहा yes. सर जो exempt है that is by SEZ to anything. If SEZ is selling goods or services, then it is exempt. I am a B2B, I am a registered person, I am selling some goods to SEZ. SEZ is also treated as export. For export, I am liable for e-invoicing. Then why not if I am sending goods to or services to SEZ? It is yes. I am once again repeating, अगर SEZ unit supply कर रहा है किसी को, तो SEZ unit is exempt. If I am as a notified person supplying to SEZ, then I am not exempt from e-invoice. I have to do e-invoice. All right, moving further. Again, whatever it is mentioned in terms of notification, SEZ units are exempt from e-exchange. If supply between SEZ to SEZ, then exempt. SEZ unit is exempt. An entity's aggregate turnover has crossed prescribed threshold during current financial year. From what date entity is supposed to start invoicing? आज 28 नवंबर को, we have already discussed this point. 28 नवंबर को मेरी टर्नओवर क्रॉस हो गई. From financial year 23-24, from next financial year, exactly from 1st April. Right. Regarding the turnover threshold, the e-invoice notification mentions aggregate turnover in any preceding financial year since 17-18. Considering GST was implemented since 1st July 17, how to reckon aggregate turnover for financial year 2017-18? Whether to take from 1st April 2017 or 1st July 2017? देविंदर जी जुलाई टू, गगन जी ने भी कहा, विकास जी ने कहा 1-4 से, अभिषेक, अखिलेश जी ने जुलाई, अप्रैल, सुशील जी फुल फाइनेंशियल ईयर. सर, I have to consider my GST turnover, so it would be reckoned from 1st July. It is as per their notification. 1st July onward, I have to consider if after 1st July till 31st March 2018 my turnover crossed 10 crore, then I am liable, otherwise I am. Is e-invoicing applicable to invoices issued by input service distributor, ISD? Invoices issued by ISD? No. Anish ji. Gagan ji, yes, of course. Vikas ji, yes. Ravinder ji, no. Lalit ji, no. Yes, no, yes, no. No. Kyun? Why no? Is e-invoicing applicable to invoices issued by ISD? ISD किसको invoice issue कर रहा है? गीता जी ने बिल्कुल सही कहा, B2B only. So no, ISD is just giving to itself, अपने units को. It is not supply. It is apportionment of credit only. रविंदर जी ने बिल्कुल सही कहा. ISD कर क्या रहा है? क्रेडिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना. We are not supplying any goods or services as input service distributor. We are doing only and only, we are distributing credits only. That's why this point is not there. That's why the answer is no. अमन राणा जी ने पूछा, what about in case of cross charge? अमन जी, मुझे क्रॉस चार्ज क्या समझते हैं आप, वो बताइए. आई एम जस्ट आपको मैं, अमन राणा जी, आई अलाउ टू टॉक.
अमन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। सर क्रॉस चार्जेस इज लाइक कि हम लोगों ने अपनी एक यूनिट के एक्सपेंसेस दूसरी मतलब हमारी लेट्स सपोज 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स के एक्सपेंसेस हम लोगों ने एक ही यूनिट में बुक किए हुए हैं, राइट? यस तो अपनी सेल्स टर्नओवर के अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंसेस हैं हम लोग अपनी अदर यूनिट के साथ भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, राइट? उसमें जो इनपुट हमारा एक यूनिट पे है वो दूसरी यूनिट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस शेयर कर रहे हैं, तो दैट फॉल्स अंडर अ क्रॉस चार्ज। मैम आप क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हैं एंड एक्सपेंस भी ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? राइट, बोथ। ठीक है, जब आप एक्सपेंस ट्रांसफर कर रहे हैं देन यू आर इशूइंग इनवॉइस, राइट राइट? दैट इज योर डिस्टिंक्ट पर्सन इनवॉइस। राइट Distinct person, I have already told that e-invoicing is applicable. राइट, तो बट ISD also we share in a same manner, like distinct person को ही तो हम लोग अपने ISD हम लोग शेयर कर रहे हैं। As input service distributor, we are just distributing our input ITC. There we are not distributing any goods or services or any expense. We are just distributing our credits. हाँ, अगर okay. हम सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देन ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। फिर तो ना मैंने टैक्स इनवॉइस की, ना क्रेडिट नोट, ना डेबिट नोट, फिर तो मेरी इनवॉइस आईएसडी वाली है। ओके, इन दैट केस फाइन। अगर मैं मेरे को ISD अपना सिर्फ इनपुट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन दैट केस हाउ वी विल इशू द लाइक एज यू सेड कि हम लोग डेबिट नोट भी इशू नहीं कर रहे, क्रेडिट नोट भी इशू नहीं कर रहे। मैम those are our financial documents, ma'am. Those are not credit note or debit note under section 34 or invoice under section 35. Then like वो on तो which हमारी जो document? इनवॉइस है ना वो सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे है। ओनली ISD हम सिर्फ ITC डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ITC डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कोई भी सप्लाई नहीं हुई उसमें। ओके, बट इसलिए हमारी ई इनवॉइसिंग नहीं एप्लीकेबल होगी। डिस्ट्रीब्यूट करने, बट ITC डिस्ट्रीब्यूट करने इनवॉइस तो हम इशू कर ही रहे हैं मैम, वो तो मेरे क्वेश्चन नहीं है ना। इज इनवॉइसिंग एप्लीकेबल टू इनवॉइसेस इशूड बाय ISD? I hope the thing is clear. We are moving forward. Thank you. Aman ji, you are still any document na, so which document I need? Hello. जी, right. हाँ जी, thank you. Yes sir. Next question. Is the digital signature of supplier mandatory while reporting e-invoice to IRP? No, not mandatory. Exactly, not mandatory. Digital signatures की कोई compulsion नहीं है भाई। Whether e-invoicing is applicable for supplies involving reverse charge? Supplies involving reverse charge, ललित जी ने कहा yes, सचिन जी ने कहा yes, दविंदर जी, राकेश जी ने सबने नो कह दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सर। If the invoice issued by notified person is in respect of supply made by him but attracting reverse charge under section 9(3), e-invoicing is applicable. Sir, what is 9(3)? Please go through the example. For example, a taxpayer, say a firm of advocates having great turnover of more than 500 crore or whatever may be, is supplying services to a company who will be discharging tax liability as recipient under ICM. Such invoices have to be reported by notified person to IR. जो मेरी 9(3) वाला रिवर्स चार्ज है ना सर, a firm of advocate has rendered services to me. I am supposed to pay tax under reverse charge. Then I am generating invoice, self-invoicing. That self-invoicing will involve reverse charge. चमन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, not for 9(4). On the other hand, where supplies are received by notified person from unregistered person, attracting reverse charge under 9(4) or through import of services,
e-invoicing doesn't arise, not applicable. Clear with the concept? Reverse charge e-invoicing. Can I demand details of a reported invoice for which IRN has already been generated? मेरी e-invoice में कुछ रिपोर्ट हुई, गलती गुलती हो गई, तो क्या मैं उसको अमेंड कर सकता हूं? चमन जी कहते नो, दिनेश जी कहते यस, गगन जी कहते नो, गगन जी कहते कैंसल, सचिन जी ने कहा GSTR 1, यस यस, ललित जी ने भी कहा नो बट इन GSTR 1, वेरी राइट. वी कैन नॉट अमेंड अवर ई-इनवॉइस. उसकी अमेंडमेंट की कोई ऑप्शन नहीं है. 24 घंटे में हम कैंसिल कर सकते हैं ई-इनवॉइस, लेकिन GST 1 में जो भी अमेंडमेंट करेंगे हम करें. ई-इनवॉइस हमारा एक इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसमें हमने कुछ डिटेल इनवॉइस की देनी है, सारी डिटेल देनी है. इनफैक्ट हमने वो सारी डिटेल दी. GSTR 1 is for amendments. Our main document is GSTR 1. We can amend in GSTR 1 anything. However, these changes will be flagged to proper office for information. उनको information जाएगी. हम हमने 1 में अमेंडमेंट करेंगे, वो वहां पे आ जाएगा कि ये रेड बॉक्स जैसे हो रहे हैं आजकल 3B वाले, would be the similar. Cancelled, we have already discussed that within 24 hours from the time of reporting we can cancel, just like e-way bill. However, if the connected e-way bill is active or verified by the officer during transit, cancellation of IRN will not be permitted. अगर आपका e-way bill भी साथ में था और वो e-way bill active है, आपने उसको कैंसिल नहीं किया, और your bill have been verified during transit, प्रॉपर ऑफिसर ने रास्ते में गाड़ी चेक कर ली है, फिर IRN कैंसिल नहीं हो सकता. In case of cancellation of IRN, GSTR 1 will also be updated with such cancel status. Can I partially cancel a reported invoice? सारी नहीं, कोई बीच में एक आधी गलती रह गई, I want to cancel that. I want to change. No, it has to be cancelled in total. पार्शियल कैंसिलेशन की कोई ऑप्शन नहीं है. ई इनवॉइस पूरी की पूरी कैंसिल होगी, पार्ट में नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. I have generated IRN for an invoice. There is discrepancy in the invoice and supply also did not materialize. So I had to cancel it in my system. However, I could not cancel the IRN on IRP as the cancellation window has expired. What to do? 24 घंटे हो गए हैं, मैंने मटेरियल भी सप्लाई नहीं किया, मटेरियल भी सप्लाई नहीं हुआ. देयर इज नो सप्लाई ऑल्सो डिडंट मटेरियलाइज. देयर डिस्क्रिपेंसी इन इनवॉइस. मैंने अपने सिस्टम में कैंसिल कर ली इनवॉइस. व्हाट टू डू? कैंसिल इन GSTR 1. सचिन जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो कुछ भी करना है हमें GSTR 1 में करना. Obtaining IRN by notified taxpayer is a legal requirement before issue of specified document to recipient. Upon generation of IRN, amendments are not possible on IRP, and cancellation of IRN only is permitted within a time window. So the detail of invoices actually issued during the tax period have to be reported in GSTR 1. GSTR 1 is the final and self-assessed statutory statement of outward supplied by the taxpayer at the end of tax period. GSTR 1 is our final document. In the e-invoices auto-populated in GSTR 1 table, taxpayer shall delete the details wherever required as per the document actually cancelled during the tax period. हम GSTR 1 में जो अमेंडमेंट हमें करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन remember one thing, your GSTR 1 table, if you are amending, as I have told you earlier, that would be reported to the proper officer. So be ready to explain the things, why it has been cancelled after generation of IRN, and don't make it a common practice. It should be used rarely. It can be used, it is our legal right, we can use, but I would suggest that please be vigilant while doing this thing when IRN has not been cancelled and we are cancelling in GSTR 1. With the introduction of e-invoicing, in e-way bill still compulsory? Dinesh ji, yes. जो भी e-way bill की requirement है, that is applicable.
that is there. E-invoice details are getting auto-populated into GSTR1. Do I need to check them before filing GSTR1? Auto-populate हो गई, check तो कर ही लेनी चाहिए भाई. Yes, it may be noted that our auto-population of details is only a facility extended to taxpayer. This is their clear-cut system. They are saying we have given you a facility. Now it is correct or incorrect, you have to check. Ultimate liability is yours. The statutory obligation to file GSTR with accurate details lies with the taxpayer. So उसको जरूर check कर लें. My supplier says they have generated IRN for invoice, but in GSTR 2A, the detail of IRN are not appearing against those invoices. Why? मेरा सप्लायर तो कह रहा है कि मैंने IRN इशू किया है, मैंने इनवॉइस की है, ये लो ये इनवॉइस की कॉपी, but in GSTR 2A IRN is not appearing. Why? झूठ बोल रहा है. Wrong GST number, maybe late point. सर सब चीजें पॉसिबल है. लेट फाइलिंग हो सकती है, नेक्स्ट 2B में जा सकता है. एडिट कर दिया उसने GSTR 1 में, ई इनवॉइसिंग किया बट GSTR 1 में एडिट कर दिया. In such cases, the re-uploaded modified detail will be visible. However, the source IRN and IRN date will be reset to blank in respective table of GSTR, and also the set details won't get reflected in GSTR 2A, 2B, 4A, 6A also. जब अमेंडमेंट हो गई, डिलीट हो गई, री-अपलोड हो गया 1 में, तो वो ई इनवॉइस आपके 2A में नहीं आए. सर क्रेडिट लेने में मुझे क्या दिक्कत है? क्रेडिट लेने में मुझे क्या दिक्कत है? GSTR 1 तो मेरी 2A से, जो मुझे 3B में क्रेडिट लेना है दैट वुड बी मैच विद 2A. 2B में भी आएगा. वहां पे जो वर्डिंग है ई इनवॉइस IRN वो नहीं आएगा, इनवॉइस तो आएगी. इनवॉइस तो है ना, जो अमेंडमेंट है, व्हाटएवर द अमेंडमेंट इज देयर दैट वुड बी देयर. Amended invoice would be there. I'll be claiming credit as per that because I would have received only that. Sir, invoice, गगन जी कह रहे हैं invoice सही नहीं माना जाएगा without IRN. If it is reporting in my GSTR 2A, IRN is not my liability. I am the recipient of goods or services. That is the liability of supplier. Even if I have received goods or services without IRN and it is appearing in my 2A, my credit cannot be denied. He would be penalized for not issuing IRN. अभी एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में Q&A में, what is the time limit of issuing e-invoicing, of generating e-invoicing? आगे क्वेश्चन में भी है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. There is no time limit prescribed for issuing e-invoicing, but as per rules, if your goods are moving without e-invoicing and you were liable for e-invoice, it would be treated as without any invoice. मतलब अगर आपने e-invoicing किए बिना गुड्स मूव कर दी तो वो ट्रीट की जाएंगी कि आपने इनवॉइस नहीं. लेकिन अगर आपने बाद में ई इनवॉइस इशू कर दी, टाइम लिमिट तो कहीं पे दिया ही नहीं हुआ ई इनवॉइसिंग का. नोवेयर कहीं नहीं कहा कि गुड्स इशू करने से पहले ई इनवॉइस होनी चाहिए. कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं. गगन जी कहते हैं ई इनवॉइस ही नहीं है तो आईटीसी की कंडीशन ब्रेक हो गई. अखिलेश जी कह रहे हैं टाइम लिमिट फॉर ई इनवॉइस इज सेम फॉर इशूइंग द नॉर्मल इनवॉइस. सर मैं तो ये कह रहा हूँ लॉ में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन लॉ में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं की, ई इनवॉइस इशू नहीं की विद योर नॉर्मल इनवॉइस, जनरेट नहीं की, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज विदाउट गुड्स. तो ये तो है ही है कि मुझे इनवॉइस साथ में ही इशू करनी है, लेकिन अगर नहीं इशू की तो बाद में भी इशू हो सकती है. उसकी जो पेनल्टी लगेगी वो दैट इज देयर ऑलवेज. आईटीसी की कंडीशन है इनवॉइस इशू होनी चाहिए. 16(4) की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं.
goods must have been received or services must have been rendered. You must have a proper document with you, that is invoice. You have the invoice. आपके 2A में बोल रही है अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है that it should be appearing in, you can take ITC only if it is appearing in your 2A 2B. That is there. Only the IRN is missing. Only the IRN is missing. For any technical reason, many courts have come to our favor that for any technical reason, your ITC cannot be bought. Lekin still, I am of the sound opinion or clear-cut opinion that e-invoice should be there for avoiding any sort of dispute, because dispute always comes with cost and benefit analysis. If my ITC is say for 50,000 rupees and cost of litigation is few lakhs, that is quite cumbersome things. So it is always better that the process or compliance should be there and it should be proper. गगन जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट रेसिपिएंट को ही पकड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर गलती है तो भुगतना तो पड़ेगा। वो आपको अपने सप्लायर को बताना पड़ेगा कि ये अपीयर नहीं हो रही है, उसको अपनी कॉपी दीजिए। रीजन मैंने आपको बताया कि ये रीजन हो सकता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजन। चलें सर आगे। Some of the e-invoices reported and issued have not been auto-populated in GSTR1. There is discrepancy in some e-invoices as reported to IRP and data auto-populated in GSTR1. अब आपके पास जो e-invoice और जो डाटा auto-populate है GSTR1 में, दोनों में डिफरेंस। एक तो था कि शो ही नहीं हो रहा, अब वहां पे दोनों में डिफरेंस है। अगेन द सेम थिंग, कि रीजन वही हो सकते हैं, लेकिन such instances of discrepancy or related feedback can be shared by GST self service portal. जो इनका सेल्फ सर्विस पोर्टल है, आप वहां पे टिकट रेज कर सकते हैं। वैसे उसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये सॉल्यूशन यही है। Tables in my GSTR1 got auto populated with data from e-invoice. However, I want to delete all that and uploaded data afresh on my own. How can I do this? मेरी GSTR1 में वो सारा कुछ आ गया जो ई-इनवॉइस में था, मुझे चेंजेस करनी है। हाउ टू डू दैट? पहले ऑप्शन ऑन पोर्टल ऑनलाइन, you can use the reset button available at the bottom of GSTR1 dashboard. Click this to delete complete details from GSTR1 table. फिर सारी की सारी आप अपने लेवल पे करेंगे। अदरवाइज सिलेक्टेड रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो रेलेवेंट टेबल में जाइए, उसको डिलीट कीजिए, या GSTR1 जेसन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसमें चेंजेस कीजिए, फिर दोबारा अपलोड कर दीजिए। सो यू कैन चेंज। मतलब कहने का ये है कि अगर ई इनवॉइस में अगर आपको कोई चेंज भी करनी है, इट इज नॉट वो पत्थर पे लकीर हो गई जी कि अब GSTR1 पे कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ GSTR1 में हो सकता। मेरे पार्ट पे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए सर। अब मैं Q&A में जाता हूं कि कुछ है क्वेश्चंस वहां पे, या भी अगर आपके क्वेश्चंस कोई हैं तो। जमीत जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सर्विसेज के लिए भी है। चमन जी ने भी कहा बोथ सप्लाईज एंड सर्विसेज। अनीश जी कह रहे हैं सर पेट्रोल पंप डीलर जो 100% B2C में सेल शो करता है, उनके केस में क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है सर। इफ आई एम सेलिंग अंडर B2C, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, वो हो गई है, मेरी रजिस्ट्रेशन आ गई, अपनी ई इनवॉइसिंग की हो गई है। अगर मैंने कोई सेल लुब्रिकेंट की बेसिकली B2B की है जो टैक्स इनवॉइस है, तो उसका मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अनीश जी, आई बिलीव इट इज क्लियर नाउ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये यस नो वही आंसर्स हैं। Can e-invoice be backdated? What is the time limit of generating an e-invoice? We have already discussed this, sir. Whether second-hand goods sold to registered person covered? Sir, आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे सेकंड हैंड गुड्स के लिए भी, वो सामने वाला रजिस्टर्ड है
सामने वाला रजिस्टर्ड है तो आपने B2B इनवॉइस इशू की है तो आपको ये इनवॉइस करनी है। मनप्रीत जी, ISD we have already discussed in detail. जगमीत जी कह रहे हैं इनवॉइस डेट 4/10/22 एंड IRN डेट 28/10/22 हो सकता है सर, इनवॉइसिंग भी लेट है, हो सकता है उसमें कोई नहीं है। अच्छा जी, अब इधर चैट बॉक्स में अपने आ गए क्वेश्चंस। हाउ टू रिपोर्ट इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इन ई इनवॉइस। सर बिल ऑफ सप्लाई ई इनवॉइस में जाएगी नहीं अगर आपकी दो चीजें हैं। अच्छा एक क्वेश्चन, आई एम इशूइंग टैक्स इनवॉइस, उसमें एग्जम्प्ट गुड्स भी हैं और टैक्सेबल गुड्स भी हैं। से पेट्रोल सेल है 1 लाख रुपए की और साल में लुब्रिकेंट की सेल भी है, तो क्या ई इनवॉइस होगी, यस और नो? गगन जी कह रहे हैं यस यस यस, बिल्कुल जी होगी, और उसकी आपको लाइन वाइज डिटेल चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। B2B टर्नओवर है वो होगी ही होगी। Is ITC allowed whose IRN number will not be generated? We have discussed this point, Rakesh ji. Yes, in my opinion, yes. Lubricant sale is 1000 and invoice come bill of supply is issued. सर अगर आपकी lubricant sale B2B को है, आपको ये इनवॉइस करनी है, वो टैक्स इनवॉइस इशू होगी। If a liquor company raise invoice for liquor to other registered, I think it will not be reported. सर वो GST में कवर नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ लिकर ही है, और alcoholic liquor for human consumption is not under GST. अगर कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो आना है। अंशु गर्ग जी कह रहे हैं फॉर हाउ मच अमाउंट। सर आपका टोटल ई इनवॉइस जनरेट होगा, B2B आपने टर्नओवर की है, एग्जम्प्ट की डिटेल भी बीच में जाएगी और टैक्सेबल की जाएगी, टोटल अमाउंट की इनवॉइसिंग करेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। फिर Q&A में है, कैन ई इनवॉइस बी इशूड आफ्टर 2 days ऑफ इशूइंग नॉर्मल इनवॉइस? येट इट इज पॉसिबल बट नॉट एडवाइजेबल। सुरेंद्र जी भी पूछ रहे हैं ऋषि जी वाला ही क्वेश्चन, इफ क्लाइंट फॉरगेट टू इशू इनवॉइस देन कैन बी लेटर जनरेट इनवॉइसिंग? यस इट इज पॉसिबल बट नॉट एडवाइजेबल, अगेन आई एम सेइंग। I hope I have cleared all the issues. Thank you very much for a very patient hearing. 1 घंटे में can we treat invoice come bill of supply and invoice at par for invoice purpose? सर भी अगर हमारा टैक्सेबल पार्ट बीच में है तो हमें टैक्स इनवॉइस ही इशू करनी है। In that case we cannot issue bill of supply. For bill of supply we will not be issuing e-invoice, but for tax invoice we will be issuing e-invoice. अगर आप दो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, one is tax supply, your is the petrol pump, you are issuing 2 documents, one is for petrol, that is your bill of supply, and the other is your tax invoice for lubricants. अगर आपकी जो टैक्स इनवॉइस लुब्रिकेंट है वो इनवॉइस होगी, जो आपकी बिल ऑफ सप्लाई है पेट्रोल या डीजल की वो नहीं होगी। गगन जी थैंक यू वेरी मच जी, मुझे भी बहुत मजा आया आप सबके साथ डिस्कशन करके, थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू अश्विनी जी। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। आप स्टिपनी नहीं, आप तो मेन हमारा ट्रक हो जो लोड लेके चल रहा है, तो मतलब कहते हैं ये तो चलो हमने आपको स्पेयर इसलिए रखा है कि आप सभी फैकल्टीज की मतलब क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ चेक करते रहो, और आज बाई चांस फैकल्टी ही हमारी बीमार होगी तो आपने पूरा चार्ज ही ले लिया। तो थैंक यू वेरी मच पीयूष जी ने, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पीयूष जी से किसी भी टाइम पूछ सकते हो। मतलब ही इज ऑलवेज अवेलेबल रिलेटेड टू जीएसटी की कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। और कल अभी अर्चना जी से मेरी बात हुई है, कल शी इज टेकिंग लेक्चर ऑन इंडस्ट्री वाइज, जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं उसमें की इंडस्ट्रीज होटल और हॉस्पिटल तो वो ले ही रही हैं। उसके अलावा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है अभी कि आप GTA टूर एंड ट्रेवल एंड जो एक और हमारी रिमेनिंग इंडस्ट्री रहेगी रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके पास टाइम बचेगा 2 घंटे में, तो अगर आप इनमें से भी कोई इंडस्ट्री ले सकते हो तो वो भी काइंडली टेकअप कर लेना। और फिर डे आफ्टर टुमारो वाले स्पीकर को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई इंडस्ट्री टेकअप करने के लिए। अगर कोई फिर भी इंडस्ट्री रह गई तो देन वी विल लॉन्च पार्ट 2 ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।
गौरव जी आप जरा पीयूष जी को बढ़िया सा कर दो फोटो, थैंक्स। कहता मेरी आवाज ही नहीं आ रही, चलो फिर हाथ जोड़ दो। थैंक यू सर, थैंक यू चलो जी, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, वी विल